बनाना, कैटल पार्क भी बनाना, जो मंदिर से जुड़ा हुआ तालाब है, तीर्थ स्थल है, वहां पर हम स्टेट घाट भी बनाते हैं। और ग्रामीणों के सोशल लाइफ में चेंज करने के लिए हम चारों तरफ इवेंटमेंट को वाकई भी बनाते हैं। उसके कारण से का वाटर है, वहां पर किस टाइप की टेक्नोलॉजी हम लगा सकते हैं, उसकी हम निर्णय लेते हैं। ये हमारा फाइनल वर्किंग ड्राइंग्स है, ये हमारा राखी खास का है। जब सब करूंगा नेक्स्ट, ये हमारे टिपिकल ड्राइंग्स हैं, जो सेक्शन हम ड्राइंग इशू करते हैं, जिसके आधार पर एस्टिमेट और वर्क वार्ड होता है, जिससे कि क्वांटिटी भी एक्यूरेट होती है और जिसके कारण से हम रिस्टोरेशन भी हम क्वालिटी के हिसाब से कर पाते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना घोषित की थी वर्ष 2022 में, उसके तहत हमने 22 जिले में हमारा लक्ष्य था 1650 का, उसमें हमने आज के दिन में 1917 तालाब हमने अमृत सरोवर में, ये हमने अमृत सरोवर पोर्टल भी हमने बनाए हुए हैं, जो रियल टाइम था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अनूठी दिशा दी है कि जो आज के दिन में जो अमृत सरोवर है उसमें हम अमृत प्लस, उसको अमृत कहेंगे, जब हम उसमें फुटपाथ, सोलर बने बेंचेस, सोलर लाइट्स और प्लांटेशन, ये मैंडेटरी 4 आइटम और लगाएंगे तो उसको अमृत प्लस कहेंगे। ऐसे अमृत प्लस के ऊपर यदि इनकम जनरेशन के स्पॉट पर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कृषि कल्चर, माइक्रो इरिगेशन एंड टूरिज्म, 25 एकड़ से ऊपर के जो तालाब हो जिससे हम टूरिज्म का भी हम स्कोप निकाल सकते हैं, ऐसे तालाब को हम अमृत प्लस प्लस कहेंगे। ये देश का पहले दृष्टि से अब कौन अथॉरिटी के पूरे देश का में पहला राज्य है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से गठित हुआ था। और ये जो अमृत प्लस और अमृत प्लस प्लस की जो योजना है, ये भी अपने आप में अनूठी योजना है। मैं इसको रसब करता हूँ, कुछ समय कम है, वार्निंग आ रही है। ये हम जो हमारे सिस्टम जो टोटल जो हमारा जो सिस्टम है, ये हमने टोटल मॉनिटरिंग हम ऑनलाइन करते हैं। ये हमारा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, कैसे किस एक्टिविटीज में कितना डिले हो रहा है उसकी हम मॉनिटरिंग ऑनलाइन कर पाते हैं एमआईएस सिस्टम के माध्यम से। नेक्स्ट, और दूसरा हमारा है डिमांड रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म, और ये हमारा ऑनलाइन ही है। कोई भी कौन से संबंधित कोई भी व्यक्ति मोबाइल के द्वारा अपना कंप्लेंट कौन से संबंधित डालता है, उसको हम उसी हिसाब से एड्रेस करते हैं। जो सक्सेस स्टोरी हमारी है, नेक्स्ट, ये हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है जो हमने SWRA के साथ भी मिलकर बनाई है, जो हमने कहा कि 4011 विलेज के 6957 पाउंड्स में जो हम एरिया हम जो कवर कर रहे हैं 9723 हेक्टेयर, और उसका जो इन्हेंसमेंट इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 9944 करोड़ लीटर्स, और वाटर रिचार्ज में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा 5834 करोड़ लीटर्स। एक इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो हमारा वेटलैंड टेक्नोलॉजी है, इसको हमने अप्लाई किया है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्रेन्स आर ट्रिब्यूटेड एंड नंबर 4
जो पानीपत से गोहाना होते हुए कासांडी से होते हुए आगे की तरह जाती है, उसको भी हमने इस ड्रेन को, ये जो तालाब हमने जिसको रिस्टोर किया है, इसको अर्लियर इसको पानी को तालाब को भरने के लिए कैनाल का पानी यूज करने का प्लानिंग थी। हमने ड्रेन को ही कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी से ट्रीट कर दिया है और इसी पानी ड्रेन के पानी को हम दोनों तीन सभी तालाबों में हम यूज करेंगे। इसके सक्सेस के बाद में जितने भी अपने ऐसे इंडस्ट्रियल बेस्ड ड्रेन हैं इन द स्टेट, उसको भी हम इसी टेक्नोलॉजी से माध्यम से ट्रीट करके और आगे हम इस पानी का उपयोग हम तालाबों में और सिंचाई में उपयोग करेंगे। नेक्स्ट फोटोग्राफ में आएंगे। ये पहले की स्थिति है, ये हमारा पहले की स्थिति है, अभी हमने जो बनाया है उसका ये स्थिति है। 2 मिनट का वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा। ये हमारा जो ट्रिब्यूटरी डैम नंबर 4 का जो है उसका छोटा सा वीडियो है। ये हमारा यहाँ से पीछे से पानीपत से पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये हमारा छोटा सा वाटर बॉडी था जिसको हमने वेटलैंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने इसको गैबियंस और फिल्ट्रेशन ऑक्सीडेशन पॉन्ड फिल्ट्रेशन वैन एंड एक्वेटिक, अभी इसमें एक्वेटिक प्लांट नहीं लग पाया, अभी अब लग जाएगा। ये हमारा है, इसके माध्यम से हम इसको ट्रीट करके हम इस पानी को नेक्स्ट ये हमारा आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा वेटलैंड है, ये हमारा कासांडी पॉन्ड है। इस पानी को हमने पहले इसकी स्थिति बहुत बुरी थी, अभी हमने इसको भी ठीक किया है पॉन्ड को भी, और ये हमारा वेटलैंड टेक्नोलॉजी जो ड्रेन को हमने जो किया है। नेक्स्ट अब हमने इसको वाटर मॉनिटरिंग भी हमने करना शुरू किया है। हमारे साइंटिस्ट हैं कि किस वाटर का हमने जहां वेटलैंड का टेक्नोलॉजी उपयोग किया, उसका पहले का वाटर क्वालिटी क्या थी, आफ्टर टेक्नोलॉजी के बाद में हमने क्या उपयोग किया है। नेक्स्ट टेपला का दिखाइए। टेपला का है, पहले का तालाब की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति हमने क्या किया है। इसका वाटर क्वालिटी का जो है बीओडी सीओडी उसकी स्थिति है ये। अब इसके बाद हम पॉन्ड को हम लोग सरकार के सहयोग से और पॉन्ड अथॉरिटी काम कर रही है, लेकिन इसकी भागीदारी जब तक जन भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक ये तालाब हमारा क्लीन ग्रीन और ग्रीन नहीं रह पाएगा। इसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और स्टूडेंट एंड फैकल्टी को भी जो यूनिवर्सिटीज में जाकर, जैसे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में भी हमने स्टूडेंट्स के अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया हुआ है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से 11 जिले के 22 गाँव में हमने संपर्क किया, वहाँ भी जल आरती कराना, जल संकल्प कराना, और नवोदय विद्यालय जिले में भी जाकर उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज की है कि बच्चों के बीच में इसका अवेयरनेस हो, ऐसी एक्टिविटीज हमने प्रारंभ की है। लास्ट में जो अभी जैसे हमारे भारती जी का भी कंसर्न था कि जो फ्लड जो इस बार आई है, तो वाटर सरप्लस वाटर जो हमारे एलोंग द रिवर बैंक जो है अपने हरियाणा में, उसको भी हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे उस एलोंग बैंक के एलोंग में कितने पॉन्ड्स हैं, जिससे कि सरप्लस पानी को, ये हमारा मैप है जो हमने सरस्वती रिवर के एलोंग में जो हमारे पॉन्ड्स हैं उसके जो इसकी क्षेत्र में कितने विलेज हैं, कितने पॉन्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। हारसेट के हमारे डॉक्टर सुल्तान सिंह यहाँ उपस्थित हैं। ये सारे हमने जियो मैपिंग और जियो टैगिंग जितने भी हमने 19,529 तालाब हमने बताया है डाटा, ये जो जितने भी रिवर्स हैं सारे को हमने जियो मैपिंग जियो टैगिंग करके ये हमारे पीडीए में से मैच आईडी हैं कि किस रिवर के किनारे कितने विलेज हैं, कितने पॉन्ड्स हैं, ये हमारे एक्शन प्लान में रहेंगे, जिससे कि जो बाढ़ के समय में जितने भी सरप्लस वाटर हैं हम इसमें स्टोर कर पाएंगे। कुछ जो कुछ है जो माने इम्पोर्टेंट है, पाधा का हम है, पहले क्या था अभी क्या है, नेक्स्ट, और भिवानी का है नेक्स्ट, और चरखी दादरी नेक्स्ट। ये जैसे मैंने बताया कि NH44 यदि आप जाते और आते हैं दिल्ली से और पंचकुला के बीच में, ये रियासत रिजोर्ट के पहले फ्लाईओवर के नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड में जब देखेंगे पंचकुला से दिल्ली जाते समय, ये हमारा समानिक जो है विलेज के पास में ऑन द साइड ऑफ द हाईवे, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। झिलमेरी में है नेक्स्ट, सांवला का है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हमने अलोंग द NH44 भी किया है, बाकी स्टेट्स के जो हाईवेज हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। और जो पहले जो हमारी कहावत, एक मिनट और मैं लूंगा,
ये थोड़ा सा आप सब ध्यान से देखें कि ग्रैंडफादर सॉ इट इन रिवर। वाटर कहाँ दिखाई पड़ती थी? ग्रैंडफादर के समय में रिवर, उसमें रिवर भी थे, कुएं भी थे। फादर सॉ इट इन वेल, वी सॉ इन टायर। बाकी सब खत्म हो गए, रिवर भी गंदी हो गई, कुएं भी बंद हो गए। नाउ वी आर सीइंग द वाटर इन द टायर। आवर चिल्ड्रन विल सॉ इट इन बोतल। मिनरल वाटर हमें मिलना शुरू हो गया है। Where will our grandchildren will see? Either in the capsule, और यदि उसके बावजूद भी यदि हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो हम will see the water in our tears। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए अलार्मिंग है। और इस जो हम क्या कर सकते हैं, प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much, Shri Prabhakar Kumar Verma ji. Your talk was so interesting. We want to hear it throughout the day and more things about it. And we will definitely be inviting you sometimes later in this year where we can have a full session and learn more about it. Now, next is Professor Ale Pazarkovic. He is from Belarusian State University. Professor Ale is teaching history of ancient East, of religions and of Vedic India. His priority is the history of Vedic India and surrounding areas. He has written an ancient Indian chapter of the official textbooks on history of ancient world, chapters on ancient India, ancient Iran, for official university textbooks of university students of history faculties of Republic of Belarus. In 2014, he has published his book, Rig Vedic Priesthood. Now I would invite Professor Ale Pazarkovic to give his talk. It is an online talk, please. Thank you. Over to you, Professor Ale. Well, I hope you can see my screen now, you can hear me. Let me say some words. You can hear me, yes? Yeah, definitely, sir. Loud and clear. Thank you very much. Now I would like to say just few words about the truth, which indeed the reality of Saraswati ideas taken from the Veda. If we have a chance to prove that there is a time scale that we can connect to our present, it will make us more real to neglect the ideas that Saraswati just made. Whatever we say about it, I would like to present the evidence about the Rumi, Indonesian language of the 10th century of Common Era. In his chapter 19, of India, Al-Biruni mentioned the Kali had begun 4,132 years before the time of composing of his work. And it gives us the 3102 or 3,102 years before Christ, before Common Era, because Al-Biruni India has been composed in 1,731. Al-Biruni showed one movie of ancient times, past times. He mentioned Pandavakala, which had started 2,536 years before the beginning of that Kala. The date is probably just days after Abraham. We have completely able to see here, just a passage. What is mentioned is Pandavakala. Certainly, the Al-Biruni did not connect only of this issue with the beginning of Kali, because he established Shakatala as 77-78 onward, the Shakatala dynasty. Known to him by the time, means that this issue came to power about 643 years after Kali. Usually, this 643 years distance is considered to be the evidence of inconsistency of Al-Biruni's faith chronological approach. However, it may not be pure at all because of the following reason.
We have 3,102 BC, the beginning of Kali, and there are something like between the 30 or up to 25 centuries BC, beginning of the history age. After recently, the Kali Yuga, the history it is possible to use a data of plans to establish the absolute time period for great reality. What do I mean? I mean that if we use the plural algorithm to these dates that were out of any modern discussion about the possibilities for thinking of together, well, we can use just primary evidence to connect it to these dates and to show that it was even before that date anyway. Whatever we have to do is, it is definitely the previous period. We know from chronicles that the participants of Mahabharata wars were of different dynasties. And now you can see some of representatives of those dynasties, which were the descendants of Manu. According to the researchers of Parliament, the distance between the former man and Manu makes up to 94 generations. So it means that it was anyway before the days that you showed at the beginning of Kali Yuga. Whatever it is, it gives us at least the early 3rd millennium BC or better even if we consider the Kali Yuga the 4th version of this time. So whatever we think about the distance in generation, it anyway means that it was before the date of Kali Yuga mentioned by Al-Quruni, because it was the beginning of the Mahabharata before. It means that the distance between anyway mentions that it was some centuries at least before. Here is my not complete list of the rulers mentioned in Rigveda, but in fact in running list of rulers of different areas. And here I would want to just to put your attention to one line, which is Sudas of the 7th mandala. Why? Because we have this family tradition of family mandala, and this 7th mandala gives us the mentioning of Sudas of Tomasha dynasty, who was in 68 generation position according to projector table. And you can see here the distance before the date of Kurukshetra mentioning of beginning of Kali Yuga or whatever, even if it is reduced history, it gives us at least 3 centuries before. So why I mentioned this Suda's situation, because the 7th mandala also mentioned that Saraswati river with the reference we can use as the physical event. I mean, not like a mythological or not, but as a physical event that regarding the family tradition of the 7th mandala, we can say that Sudas and Saraswati were so connected in time somewhere. So it means that during the Sudas period, we can say that Saraswati was still in existence, but it gives us at least the early late 4th millennium BC or early 3rd millennium BC. So here is the mentioning in 7th of the Saraswati connecting the Ayasi question. In the interval, you can see the distance that we can consider the Vedic age, whatever we've seen. The end and beginning with the interval, we can say, if we use the history starting point, and then the same thing we can use for Kali Yuga starting point, that gives us even earlier period. End of the Vedic age, we will be in the 4th millennium BC. So what is the conclusion from this? Whatever we think about it, the manner of times, mythology, whatever it gives us, that the early mythology in India regarding the Ayas question gives us was the early 3rd millennium BC at least. The beginning of the Bias did not be earlier, but it should be earlier than that at least.
Well, the time period shown above give us some ground to compare them with other indications given by the dedicated architects to make the following conclusions. Studying the overwhelming evidence of the 10th century of common era, Vedic Saraswati is within the post-millennial BC, and it has not much to do with any modern use of any theories. It means that outdoing evidence is important for us because it's independent clue to show that Saraswati reality as took place somewhere in the post-millennial BC. Whatever we think now about any dating made in 19th and 20th century, we know now regarding the Saraswati. Thank you very much for this opportunity to keep this part. Thank you very much. Thank you so very much, Professor Ale, and you are our strength, and we are very happy each time to host you. And I understand that it's quite late at night in your country, but still you took time out and delivered. Thank you so very much. Next we have Professor Nilesh Oak from School of Indic Studies, Institute of Advanced Studies, Dartmouth, USA. Professor Oak is doing very good work on Ramayana and Mahabharata and dating it and giving whole lot of examples and evidences. So not taking much time, I would ask Professor Oak to please begin his talk. Namaskar. My name is Nilesh Oak, and greetings to all of you who are attending and participating in this River Saraswati International Conference. My thanks to Professor Chaudhary for inviting me to present my work about River Saraswati and its interconnectedness with Indian Itihasa in this conference. So let's begin. I will share my screen, and I want to present a glimpse of how River Saraswati is very closely connected with the Indian Itihasa, and in turn how Indian Itihasa, the evidence from Indian Itihasa, and frankly let me not limit myself to Indian Itihasa, but from all ancient Indian narratives, how they are connected with River Saraswati. So let's begin. How we can tell a brief story of River Saraswati and in the process tell the story of Indian civilization. Now today Saraswati does not exist. River Saraswati is simply not there. Granted, we can find the path of it, and there are many attempts to rejuvenate the old glory of Saraswati, but it has disappeared to us. To the extent it is still in our memory and we try to recover it. For example, when people in their Shraddha discuss the presence of River Saraswati along with River Yamuna and Ganga at Prayagraj, it is one such attempt to preserve the memory of this glorious ancient river, which is closely tied to our Sanatana Dharma, closely tied to Indian civilization. So what happened? Well, before what happened, let's talk about what evidence is telling us. What we have evidence today, great work of James Blinkhorn, that River Saraswati, now we know, definitely existed for the last 200,000 years. Specifically, we have evidence of it existing 172,000 years ago, flowing near Bikaner. Now, some geological phenomenon happened. I'm talking of sometime around 70,000 years ago, possibly related to Toba explosion. We do not know that for sure. But what we do know is that
the geological changes were such that its path changed from the southwestern direction or further southwest part of India to went further northwest part of India, as I'm showing with the arrows. So essentially, as if it moved from Bikaner area to what we know modern day as Kalibanga area. The descriptions of Rigveda that we see, the grandest of the grand river, Ambitame, Naditame, Devitame, Saraswati, or the river that is flowing fast like horses, or a river that cuts the tops of the mountains as easy as somebody cutting the stem of a lotus flower, or the river Giribhya Samudra, starting in high mountains, flowing all the way to the sea. These are the times 200,000 years ago, 70,000 years ago, and even when the path has changed, it is still a grand river. This is the paper I refer to, James Blinkhorn and others, where we have evidence of river Saraswati flowing near Bikaner, going back to 200,000 years. Now, is this, you can read the paper for the details, but the question is this something that they found out the first time? Well, no. Actually, if you go back some 50 plus years ago, some of the great geologists like Dr. Ghosh, who have done great research and actually created the maps, and you can see these maps. For example, if you have to look for the shift of river Saraswati, the Bikaner may not be the starting point. Actually, the river might have flown. I said might, because we need to wait for additional evidence, but might have flown as further south as Jaipur and Ajmer, somewhere in that area. Okay, so this is from 69, like 50-year-old research. So if we have to speculate, where was river Saraswati before 172,000 years ago? Very likely into the area where I'm showing with the arrow. And we don't know what possibly caused the shift, but it shifted northward. Very likely that geological shift of Indian subcontinent coming into the Himalayas, and it shifted to Bikaner. Okay, then from 172,000 years to about 70,000 years, it's there following that old path, and then afterwards we see that shift to Kalibanga. Okay, around 70,000 years ago. What happens after that? Now, this could have happened because of various morphodynamics changes into the Indian rivers, Indian plates, geological changes, plate tectonics, so many factors. That's not the subject today. Now, from 70,000 to 50,000 years ago, essentially this is the Grand River. So when Rigveda describes this river, it could be anywhere from 200,000 years ago or even before to definitely up to 50,000 years. Okay. Now, something interesting happened around between 50,000 years and 40,000 years ago. What was that? Yamuna separated from Saraswati and started meeting Ganga. Why is this important? It's important for us to understand our Itihasa very well. Okay. For example, Ramayana describes Yamuna and Ganga meeting together, and geological evidence is telling us this happened sometime after 50,000 years ago, which means what? The Ramayana happened in the last 50,000 years ago and not before that. Okay? If you go further, so say now fast forward from 40,000 plus years to 22,000 BC. Now what's the significance of 22,000 BC? It is the peak of the glacial maximum, known as the last glacial maximum. The river waters went down, they did not dry up. There's a lot of misinformation out there, as if like India was covered with the snow. Nonsense. There was no such thing. Actually, India is a habitable land for million plus years. Okay, but certainly the temperatures cooled down. The river waters coming from the glaciers went down, and so yes, that's very important. In fact, this could be the end of the descriptions of Saraswati that you see in the Rigveda. Fast forward to 13,000 BC, about 15,000 years ago, and river Shatutri, Satluj, also left Saraswati and started flowing sharply in the west direction. In the Valmiki Ramayana, we have evidence of Shatutri flowing in the west direction. And what does that tell you? That means Ramayana happened sometime after 13,000 BC. And lo and behold, if you go to Valmiki Ramayana, look at 600 plus specific astronomy references, it
things point to a very specific year like 12,209 BCE for the Ram Ravan Yuddha, and you can actually date very specific events of Ramayana from 12,240 BCE, the birth year of Bhagwan Rama, to 12,196 BCE when Valmiki composed Ramayana and taught it to Lava and Kusha, okay, sons of Bhagwan Rama. Fast forward, now we have a younger dryas period, okay, the temperature plunged down, lot of things happen. This period is noted down in the Indian narratives through astronomy known as Rohini Shakata Veda, but that's not the topic today. Fast forward to Mahabharata times, between 7,500 BC to 4,500 BCE. Saraswati has dried down practically, or became smaller in scope from 20,000 years ago, from the last glacial maximum, not least. But now there is a rejuvenation of it through intensification of monsoon. There is a phenomenal data of Professor Anindya Sarkar, okay, and you can see very consistent data from Arabian Sea to the land-based research showing us that there was an intensification of monsoon between this time, which is where actually the Mahabharata war falls off. And Mahabharata text has close to 200, more than 100, close to 200 plus descriptions of river Saraswati, and they beautifully match with this 5561 BCE, that is the year of Mahabharata war. So river Saraswati is telling us the story, help us tell the story of Indian civilization. And the descriptions of river Saraswati in the ancient text in turn help us understand the evolution, devolution, ups and downs, the morphodynamics changes that are happening to river Saraswati. So if you have to form a timeline for our chronology, we can say Mahabharata war more than 7,000 years ago, Ramayana more than 14,000 years ago, and definitely some portions of Rigveda more than 21,000 years ago. You can remember this as a multiplication of 7,000. Mahabharata 7,000 years ago, Ramayana 14,000 years ago, and some portions of Rigveda more than 21,000 years ago. In fact, that deduction of some portions of Rigveda more than 21,000 years ago, yes, there is additional evidence, but a decisive decision for that comes from the morphodynamics of river Saraswati and the rich geological data that we have for river Saraswati going back to 200,000 plus years. Okay. Now, fast forward, post Mahabharata, after 4500 BCE, quickly, lot of other things happen, geological patterns, climatological patterns, oceanography patterns, but essentially, river Saraswati quickly dried up. And you can see this. I have not shown all the data just to limit my time, but you can actually see this evidence into a paper of Singh and Gupta, that was in Nature Communication 2017. So, not only you see Chatutri turning sharp west in 13,000 BCE, but if you look at the data in Kalibanga, okay, the width of the river, okay, last 70,000 years, getting smaller and smaller during the Mahabharata times, and further smaller by 4500 BCE, and then eventually drying up, just the Khaggar Hakra small channel remains. So I'm just showing this here symbolically by saying this river Saraswati is no more. But Yamuna still exists, Shatudri still exists. Alright, so quickly if I have to summarize our conclusions here, we know this story of river Saraswati because of the detailed descriptions of the river from ancient Indian narratives, be it Rigveda, be it Ramayana, be it Mahabharata. Okay, and of course the other texts like Brahmana Grantha and Puranas and so on. In turn, we can corroborate the specific timelines, the epochs of our ancient event, for example like Ramayana or Mahabharata, or recasting, re-editing of the Vedas by Vyasa. And for that, I would encourage all of you to read Nadi Sukta from Rigveda 10.75. That great river Saraswati, Nadi Tame, Ambi Tame, Devi Tame, Saraswati, right in the Rigveda recasting, at least by the way it is picked up by Vyasadeva, you can see that transition from a grand Saraswati to grand Sindhu. This is a point lost on many. Okay, so when many people think of Nadi Saraswati or Nadi Sukta, they are interested in the sequence of the rivers from the east to the west, and that is true and that's great.
There is a mention of Saraswati, that is also important to many, but we cannot forget the fact that that Nadi Sukta also points to a change of status of a grand Saraswati, now changing over, passing the baton to grand Sindhu. And why is that? Because Satluj has stopped feeding its water to river Saraswati, and beginning 13,000 BC, so for the last 15,000 years, it is feeding its waters to Sindhu. So that transition has been captured by Vasudev 7,500 years ago at the time of Mahabharata war, and that you see in the Nadi Sukta. And the above two, as you can see the corollary to each other, the above two are further validated. Again, I'm not going to go into it because of the limitations of time, but these conclusions are further validated by empirical and scientific multidisciplinary evidence. You just name the field of science. If the evidence exists for appropriate epochs, and you can connect the dots, they beautifully corroborate what we know from our ancient Indian narratives, what we know about river Saraswati from the geological, hydrology data and so on. So what are some of these disciplines? Geology, geophysics, climatology, oceanography, sedimentology, genetics, physical anthropology, paleontology, and so on. I would encourage all of you who are interested in knowing further about this multidisciplinary evidence to read my books and watch my YouTube talks. Again, greetings to all. Thank you to Professor Chaudhary, and I wish you all well. Have a great intellectual sessions, conversations throughout the day as you enjoy your time at the conference. Namaskar and thank you. धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर आरती भारद्वाज जी को, कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल से। बताएं, आप दर्शन के, संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं और आपके नेतृत्व में वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत उन्नति कर रहा है। आपका स्वागत है। अपना वक्तव्य प्रस्तुत। ओम। सम्मानित मंच एवं साथियों, सरस्वती नदी के माध्यम से ये भारतीय समाज, ये संपूर्ण मानव जाति क्या चाहती है, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। कारण ये है कि पिछले 200-250 सालों से भारतीय समाज के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जो नैरेटिव्स बनाए हुए हैं, वो किन किन तरह की परिस्थितियों से तैयार हुए हैं, उनको देखने के लिए एक बार अगर हम देखें तो मेरी कुछ अपनी मान्यताएं हैं जो आपको पहले बता दूं कि पिछले 12,000 साल का भारतीय वैदिक समाज का इतिहास हमारे सामने है। इतिहास के दो माध्यम माने जाते हैं, एक टेक्सुअल एविडेंस और एक आर्कियोलॉजिकल डाटा। अगर हम इन दोनों टूल्स को अगर देखें, जैसे तीसरा टूल भी है, वो है किसी भी सोसाइटी की ओरल ट्रेडिशंस, जो मौखिक परंपराएं, ज्ञान परंपराएं हैं। मगर टेक्सुअल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को आधार बनाकर अभी तक हमारे भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में लोगों ने बहुत लिखा है। 18th-19th सेंचुरी में देखेंगे तो सारे कॉलोनियल थॉट के बेस पे जो इतिहास बनाया गया, जिसमें इस भारत को एक अजीब परिस्थितियों वाला देश इतिहास में बताया गया। 19th और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हमारे कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए, आरसी मजूमदार, कालिदास नाग, मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्रीय दृष्टि से वैदिक गोल्डन एज, गुप्ता गोल्डन एज जैसे विषयों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। मगर 1950 के बाद एक जो मार्क्सिस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंस ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसके माध्यम से उन लोगों ने पिछले 70 सालों में
इस भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को बहुत विद्रूप करके डिस्टॉर्शन के साथ हमारे सामने पेश किया। मैं हरियाणा सरकार को, क्योंकि मेरी कहानी ये है कि मैं पिछले 40 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन विषयों को लेकर संघर्ष करता रहा हूँ। चौधरी साहब इसकी अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास को मार्क्सिस्ट थ्योरी, डी कौशाम्बी की थ्योरी के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन 3 विश्वविद्यालयों ने इस मार्क्सिस्ट थ्योरीज के आधार पर इस पूरे भारत के इतिहास को विद्रूप करके प्रस्तुत किया। विषय यह है कि इतिहास हमें आवश्यक क्यों है, क्योंकि अस्तित्व बोध, आइडेंटिटी, भारतीय समाज की जो आइडेंटिटी है वो हमारी मूल रूप से वैदिक समाज की संकल्पना या आधार है। और जब सरस्वती नदी के माध्यम से आप कोई भी शोध कार्य करते हैं, क्योंकि ये वही इस वैदिक सभ्यता संस्कृति है जो इस सरस्वती नदी के तट पर मेरे आदरणीय गुरुवर दीननाथ बत्रा जी कहा करते हैं कि अगर सरस्वती नदी का नाम निकाल दें तो भारत का वैदिक समाज का पूरा जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो कहीं भी नहीं रह पाता है। तो सरस्वती नदी का तात्पर्य है कि एक ऐसी नदी जिसके किनारे पर हमारी ऋग्वेद से लेकर और बाद तक की जितनी भी संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है कि आज तक ये ऋग्वेद से चली वैदिक संस्कृति सातत्यपूर्ण रूप से कंटिन्यूटी में आज भी समाज में उसी रूप में एग्जिस्ट करती है। और उसको पहचानने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, जिसे मैंने कहा कि 12,000 साल का इतिहास, वैदिक समाज का इतिहास आपके पास है। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले हमारे बहुत बड़े पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट एम.आर. मुगल ने मेहरगढ़ में 8,000 7,000 बीसी से लेके, तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता है, पर उसकी पिछली जो विकासमान जो अलग अलग प्रगतियां हैं वो मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में आपको प्राप्त होती हैं, जिससे बताते हैं कि 8,000 बीसी से लेके आज तक ये भारतीय समाज सातत्यपूर्ण रूप से विकसित समाज के रूप में, वैदिक समाज के रूप में आज तक आपके सामने आया हुआ है। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आज का भारत नहीं है, ये केवल 1947 का भारत नहीं है। ये जो भारत है ये सेंट्रल एशिया, पश्चिम एशिया और ये जो साउथ एशिया, यहाँ तक का जो पूरा विषय है ये है पूरा समय वैदिक सभ्यता के विकास का। और जिस जगह हम बैठे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, कैथल में जहाँ हमारा विश्वविद्यालय है, ये वो काल है जहाँ पर उत्तर वैदिक कालीन अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों की यहाँ पर संरचना कहिए या ऋषि ने उनको देखा ये कहिए। क्योंकि आप अगर इस पूरे क्षेत्र के गांवों को हम देखते हैं, जैसे एक गांव है हमारे यहाँ निसिंग के पास बस्तली, असल में वो बस्तली नहीं है, वो व्यासस्थली है, जो हमारे प्रमाण टेक्सुअल एविडेंस हमको ये बताते हैं कि वहाँ महर्षि वेद व्यास ने याज्ञिक कर्मकांड की दृष्टि से 4 वेदों का संपादन किया था। अब बहुत से गांव हम अपने कैथल में देखते हैं जहां पर हमको ये मालूम पड़ता है कि इस गांव में तैत्तिरीय संहिता, हमारा गांव है जहां हमारा अभी कैंपस किराए पे चल रहा है, टीक गांव, वहां हमने 8 साल में जाके देखा, बात की लोगों से, तो ओरल ट्रेडिशन, टेक्सुअल एविडेंस दोनों बताते हैं कि टीक वो गांव है जो तैत्तिरीय संहिता का स्थान है। ऐसे ही वाजस्नेयी संहिता, अलग अलग कृष्ण यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की, अथर्ववेद की अलग अलग शाखाओं का जहाँ पर विकास हुआ, ये आपका ये पूरा ही क्षेत्र है। और इसको पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने भी सपोर्ट कर दिया है। और एक समस्या क्या है कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे उन लोगों ने भी ये जो पूरा विषय लिया वो टेक्सुअल एविडेंस की डिस्टॉर्शन के आधार पर लिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे राष्ट्रवादी आरसी मजूमदार ने गोल्डन एज, गुप्ता एज को बताया, वैदिक एज को बताया, तो हमारे यहाँ दिल्ली स्टेट प्रोफेसर डी.एन. झा थे, उन्होंने उसको जो है एक और गलत रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे ही वैदिक एज के ऊपर जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का विषय था उनको उन्होंने अलग रूप में रखा। मगर अभी जो सबसे बड़ा विषय जो हम तो हिसाब से डिस्कस करते हैं वो ये है कि इतिहास तो वही है। आप देखिए जो नेशनल इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम की जो टूल्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं,
टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि इतिहास वो है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से अप्रूव होता है, हम मानते हैं, मगर साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल डाटा है उसको अगर आप टेक्सुअल एविडेंस से कोरिलेशन करके जक्स्टापोजिशन जब लाके देते हैं तब वह सच्चा इतिहास बनता है। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डाटा जो है वो आपको कुछ सजेस्ट करता है, मगर टेक्सुअल एविडेंस जो है उसका पूरी तरह से आधार देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बड़े मतलब जिनका मेरे आदर्श मेरे राइटर्स हैं अरुण कुमार विश्वास, जिन्होंने प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत किताबें लिखी। उनकी किताब है मिनरल्स एंड मेटल्स इन एंशिएंट इंडिया। अब मिनरल्स को मेटलर्जी को लेके उन्होंने जो है आर्कियोलॉजिकल डाटा पूरा दिया फर्स्ट वॉल्यूम में, और सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने अपनी पत्नी जो संस्कृत की प्रोफेसर थी कानपुर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, उन दोनों ने मिलकर सेकंड वॉल्यूम में लिखा कि ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, तैत्तिरीय संहिता में या ब्राह्मण साहित्य में किस तरह से मेटलर्जी का या मिनरल साइंसेस का जो है टेक्नोलॉजीज का विकास हुआ था। तो इस तरह से हमको आवश्यक है कि हम लोग ये जो सरस्वती नदी के किनारे जो अपने इतिहास के पुनर्गठन में काम कर रहे हैं, हम संस्कृत के स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट इन दोनों को मिलके इनका एक कोरिलेशन बना के एक सच्चा इतिहास जो भारत का है वो समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। समय बहुत कम है क्योंकि अभी बहुत वक्ता यहाँ पर है, मगर ये लंबे भाषण का समय नहीं है। फिर भी मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, माननीय कुलपति जी को और चौधरी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अच्छे विषय पर ये रखा, क्योंकि ये विषय हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। और जब तक ये समाज, भारतीय समाज अपनी अस्मिता का बोध नहीं करेगा, अपने अतीत पर, अपने गौरवपूर्ण इतिहास पर, वैभव पर वो विश्वास नहीं करेगा, आत्मसात नहीं करेगा, तब तक यह देश, ये समाज जिसका उत्तरदायित्व है संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना, जो हमारे ऋषियों का, क्योंकि हम केवल भारत तक अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं, हमारी वैदिक ऋषियों की जो वाणी है वो सृष्टि के कण कण के मानव जाति के कल्याण के लिए है। वह जो हमारा उत्तरदायित्व गुरुतर है उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी वैदिक सभ्यता संस्कृति की प्रामाणिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में स्थापना करके अपने समाज के सामने, अपनी युवा पीढ़ी के सामने इसको रखने का पूरा प्रयास करें। और जो हम प्रोफेसर्स हैं, हमारा दायित्व है कि जितने डिस्टॉर्शंस हैं, जितने विद्रूपता, जितनी गलत चीजें इतिहास के बारे में हमारे मार्क्सिस्ट या वो लोगों ने लिखी है, उनका हम तार्किक, प्रामाणिक, वैज्ञानिक खंडन करके समाज को एक अच्छा दस्तावेज प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Thank you so very much, Professor Bhardwaj ji. What you told was something that was wanting for a long time, and it would go a long way in making the young generation understand about the pride of our country. Now, next I invite Dr. S.S. Kadyan, EIC State Water Regulatory Authority. Okay. So next again we have an online presentation from Dr. N.P. Singh. He is the former Chief General Manager, Frontier Basin, KDMIPE, Dehradun. Dr. N.P. Singh did his PhD from IIT Delhi and has been working in ONGC for more than 35 years now. He was heading the Project Monitoring Committee of ONGC for drilling and completion of 10 deep water wells along the PDO channels of Saraswati River. He will be talking about these in his talk. He is superannuated from ONGC and he is engaged, presently he is engaged in ONGC as a senior consultant. I invite Dr. N.P. Singh for his talk, please. It's an online talk. So please unmute yourself and start.
So please start. Dr. N.P. Singh ji, please start. Sir, please start. Unmute कर लें अपने आप. Unmute कर लें सर अपने आप. सर unmute करें अपने आप को. स्टार्ट करें. We are waiting for you, sir. Please start. हाँ जी, आपका है सर. Please start. हाँ जी, हाँ जी सर. सर नहीं कर सर प्लीज स्टार्ट करें. ओके, हम आपको सुन पा रहे हैं. Please start, sir. Dr. N.P. Singh ji, please start. Yeah, yes, I think I'll be. Are you able to see now? Yes, sir. We are able to see. Great. Namaskar. I'm Dr. N.P. Singh from ONGC. Welcome to this edition of International Conference on Saraswati, which basically is on the theme of Jal hai to Kal hai. By profession, I'm a geoscientist, so my presentation will be based mainly on scientific and technical studies carried out by ONGC. Right. So this is the flow of my presentation. As you can see, we'll be talking about a little bit of background, and in fact, the Saraswati was conceived by ONGC based on the success of Libyan river, where earlier Sahara Desert was basically not having enough water, so a man-made river was basically they tried to supplement the source from man-made river, but then ultimately they had to revive an old running river in which and similarly hello. I'm loud. I'm clear, Professor Chaudhary. Professor Chaudhary. Yes, sir. Carry on. Okay. So I'll just start with where from we rather started our work on Saraswati. So GC started the Saraswati project way back in 2002, where first Saraswati well was drilled in Jaisalmer, near city Jaisalmer, and it was a big success because the very first well, yielded 70,000 liters per hour
water with less salinity, because most of the wells in Rajasthan and Jaisalmer region, they are highly saline water, and so this particular well, Saraswati 1, was having very less salinity, and so the water is being used by the local people, and still it is in flowing condition. So you can see the first water well that were drilled in Jaisalmer city under the Saraswati project conceived by ONGC. So again, there was a big gap of almost 12-13 years. There was no activity on the Saraswati river development front. So in July 2014, Saraswati Nadi Shokh Sansthan, they approached ONGC for tapping groundwater along the barrier channels of Saraswati river, especially in the states of Haryana, to meet the water scarcity in the summer months. So ONGC scientists identified locations where wells can be drilled for available from the available geospatial and satellite remote sensing data, and we initially identified 6 locations, and later on Saraswati board requested for 4 additional wells, so they too were agreed by ONGC. So this is the map of the where all the 10 wells are located. You can see it in Adipatri, Mughal Bhita. Hello. Bhita, Pavnikala, Uncha Chandna, Ishargarh, Mangna, Yakar, and Birdana and Farbai. And as you can see, the target depth for these wells were kept in the range of 400 to 500 meters, so that we can in fact drill the failure channels which are no more seen on the surface. So in ONGC, in order to drill 10 wells, they had roped in water and power consulting services, a government of India PSU, and a tripartite agreement was signed between ONGC, WAPCOS, and Haryana Saraswati Development Board. And the progress and implementation of the project was monitored by the monitoring committee. Drilling and cutting, whichever all the drill cutting samples were provided to GSI for analysis, and for analysis of age of water, that is called carbon dating. Water samples were collected by Institute of Hydro